So okay, let's start the lecture. I'm sharing the screen now. So in last lecture, we have studied about different objects. Now the next point in unit number 1 is attributes. So what is meant by attribute? The main purpose of VHDL attributes are to allow the construction of generic codes as well as event driven codes. So generic, this word you heard in entity declaration syntax. In last lecture, we have studied how to write down the code. We have we have written the codes for half adder, full adder, right? But by using simple entity. In that entity, we are defining the codes only. But one more syntax for entity is that before code declaration, we have to declare the generic. So generic is optional part where the declaration of constant that are globally visible to the designer. So here these attributes, the main purpose of VHDL attributes are to allow the construction of generic code as well as event driven codes. They also serve for communicating with the synthesis tool to modify synthesis directives. So there are two types of attributes. First one is predefined attribute and next one is the user defined attribute. So let us see what is the predefined attributes in VHDL. So this predefined attribute retrieves information about the named entity. The IEEE standard VHDL language manual defines the following four categories of predefined attributes. The VHDL reference manual having four predefined attributes. First one is predefined attributes of scalar type. Second one, predefined attributes of array type. Third one, predefined attributes of signal. And fourth one is the predefined attributes of named entities. So here it is important to mention that all these attributes, that is tick event, this single apostrophe is read as a tick. That is nothing but our attribute. Attribute को कैसे define करते हैं? That is single tick. So it is read as a tick event. Whenever there is a single colon, sorry, apostrophe, we said tick. That is the our predefined attribute. So here another note is that some of these predefined attributes may not be supported by synthesis tool. So let us see. First predefined attribute. Is the screen is visible to all? Yes? Yes, ma'am. Okay. So first predefined attribute for scalar type. This attribute provides information regarding a scalar type. That scalar type is nothing but numeric, enumerated or physical type. For example, see here, type underscore my integer is range is specified, that is 0 to 255. That is the default range for the integer. This also we have studied in data types, right? Integer का range क्या रहता है? 0 to 255. So for an example, just consider this. Type my integer is range 0 to 255. Now here, whenever we write this command, x1 is assigned or is equals to my integer tick left. At that time, it will take the left value. 0 is the left value. So here we get x1 is equals to 0. Attribute क्या करते हैं यहाँ पे? What is the function of attribute? It retrieves the information. जो भी information हमने define की है प्रोग्राम में, सेम हमें वो रिट्राइव करके देगा.
तो x1 में हमने क्या कमांड दिया है, my underscore integer tick left. Tick is nothing but our attribute. Tick left is nothing but the left value of the given array. So here the left value is 0. So after executing this command, we'll get x1 is equals to 0. Next, in x2 is assigned with my underscore integer tick right. So it will take the right value, which is 255. So x2 is equals to 255. Third one in x3, it is tick low, the lowest value. So the lowest value is again 0. For x4, again it is my integer tick high. It will take highest value. So integer में हमने range define किया है 0 to 255. So again the highest value is 255. Next, y is equals to my integer tick ascending. So after executing this, it will check is it in ascending order or descending order. As it is specified 0 to 255, so yes, it is in ascending order. So y is equals to true. This is the Boolean output. Y में हमें क्या मिलेगा? True. Why? Because the range is in ascending order only. And for example, z is equals to my integer tick descending. After executing this line, it will ask for the integer, the given range is in descending order. So no, it is not in descending order. That's why it is not y, it is z. So in z, we get z is equal to false. Okay. So this is some type of predefined attributes for scalar type. Scalar type मतलब क्या है? यहाँ पे single number लिया है 0 to 255 कौन सा भी. Next हम क्या देखेंगे? Next is the predefined attributes of array type. Array type में क्या होता है? Yes, जो भी signal हम लोग use करेंगे. अभी type use किया था integer type. Now here we are using signal which is bit underscore vector. Means it is in the form of array. There are multi bits. So see here in this predefined attribute of array type is also called as a range related attributes. Why? Because it returns the parameters regarding the range of the data array. For example, see the syntax signal, the syntax of signal. Signal is x, which is a type of bit underscore vector. If it is only bit type, then it has only two values, either 0 or 1. But it is bit underscore vector, so it is shown that is m down to 0, which is nothing but the array type. So after that, if we execute x tick low, right? X is equal to अपन x tick low लिया, तो x tick low में हमें क्या मिलेगा? Yes, tell me. It retrieves the value. It is same like स्केलर टाइप ओनली. यहाँ पे एरे टाइप क्यों मेंशन किया है? बिकॉज जो डेटा टाइप हमने यहाँ पे यूज किया है इट इज m डाउन टू 0 विच इज एरे. सो x में क्या मिलेगा? यस, रिप्लाई फास्ट. स्केलर टाइप आपको समझ में आया? यस, एम आई ऑडिएबल और नॉट? रिप्लाई फास्ट. अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, आई विल रिपीट. Am I audible or not? Is the screen is visible? Yes, reply. Yes, ma'am. Then why you are not replying? मेरी आवाज आ रही है क्या? Am I audible? Yes, ma'am. Okay then. So see,
दिस प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स ऑफ स्केलर टाइप। स्केलर टाइप में क्या देखा था हमने, आइदर 0 to 255 इंटीजर्स लिया था। एरे टाइप में हमने क्या लिया है, एरे लिया है विच इज m डाउन टू 0। यहाँ पे मैंने रैंडमली कैरेक्टर यूज किया कि m डाउन टू 0। सो व्हेनेवर दिस x tick low command is executed in x, what will get low, लोअर वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, समझ में आएगा कि m डाउन टू 0 में आपको सीधी बात है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो लोअर वैल्यू m भी हो सकती है, n भी हो सकती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर m डाउन टू 0 इज नथिंग बट consider 7 down to 0. Seven down to 0. Now tell me, अभी बताइए, after executing this event, that is x tick low, what will be the Zero. output? X is equals to low मतलब कौन सी वैल्यू रहेगी, it is 0th number. Zero. Yes. For high, it is 7, Seven. right? Right. 1. Next, x tick left. अभी लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है यार के, इट इज अगेन 7. नेक्स्ट x tick राइट, राइट में क्या है, इट इज Zero. 0, right. Now tell me the length. X tick length, length of this array 7 down to 0 मतलब ये कितने बिट का है, yes, how many bits this array is having, 0 to 7 कितने बिट्स होता है, 8. 8 bit. 8 bits, right, it is 8 bit. यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है हमें, m minus n plus 1, sorry, plus 1. With the help of this formula you can calculate or you can say the length of array. So m में क्या है यहाँ पे, 7. 7 minus 0 is 7 plus 1 is 1. So it is 8 bit array. The length of this array is 8 bit, right? Now reverse range. Reverse range कैसे लिखेंगे हम, अभी रेंज यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है उन्होंने, 7 डाउन टू 0. रिवर्स में क्या आ जाएगा, 0, Down to 7. हाँ yes, 0 down to 7. It is the reverse range. Next, x tick ascending. After executing this x tick ascending, what will be the output? In last slide only we have studied ascending, descending, right? If we execute this type of instruction, that is x tick ascending, x tick descending, the output is always in Boolean form. And Boolean form has only two outputs, either true or false. So this instruction asks about, is the array is in ascending order? अभी array हमने क्या लिया है, 7 down to 0. So ये ascending है क्या? Yes or no? 12. Yes, tell me. अरे बाप रे, ascending descending नहीं पता आप लोगों को? Descending है मैडम. Yes. So x tick ascending में आउटपुट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, क्या आएगा, it is false. Why? Because the given array is not in ascending form, it is in descending form. अगर इंस्ट्रक्शन रहता x tick descending, तो x में हमें क्या मिलेगा, ट्रू. Why? Because the array is in descending. Okay? Yes, is it clear now?
Yes, see. ma'am. Now see next. Next is the predefined attributes of signals. So here for signal, the difference between an event and the transaction is that an event is a signal which has edge triggering, that is either upward or downward. This attribute is used for monitoring signal changes like clock. Clock हमने कहाँ पे देखा है? For sequential circuits, there is signal which is called as a clock. So whenever clock tick event occurs, मतलब जब clock में हम pulses देते हैं either 1 or 0 और age trigger रहता है positive pulse, negative pulse, right? So whenever the clock tick is occur, that clock tick event is occur, at that time only our program will start the running. So these attributes are used for monitoring signal changes like clock or transition. So the most common of this is X-tick event, which return true when an event occurs. For example, tick event है, tick stable, tick last, tick active, tick value. तो ये सब जो events है, we will study all these events or we will use this kind of events when we are going to design a sequential circuit, जहाँ पे हम लोग clock करके input signal लेने वाले हैं. So clock में 0 या फिर 1 constant दे सकते हैं क्या? नहीं. Whenever the clock is 0, the circuit is in reset. The output of circuit is 0. But whenever we will give 0 to 1, that is the positive edge of the positive pulse to the clock, at that time only the circuit will work, right? So for that type of circuits, we will use this type of attributes of signal. Next, predefined attributes of named entities. So these predefined attributes are used to produce a string related to the name of declared entity. तो यहाँ पे हम लोग क्या किया है? These attributes are used for string. मतलब e यहाँ पे क्या लिखे? See, for example, e tick simple underscore name means this string represents simple name for the entity. Next, e tick instant underscore name. Here the string describing the path instant दिया है, तो क्या कर रहे हैं? This is the string which describes the path from top entity or architecture down to the named entity E. Next is E tick path underscore name. अभी यहाँ पे path मतलब क्या किया है? Same, this entity also string, this is also string which describes the path from top entity or architecture to down, but it includes the name of instant design entities. It shows the directly path. So ये सब भी आप हम लोग जब अभी नेक्स्ट सिंक्रोनस सर्किट जब डिजाइन करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट, तभी आपको जब हम एग्जांपल्स लेंगे, at that time you come to know what is this attributes. So for this I am not getting that good example, that's why I am not putting here examples. So just see this name only, simple underscore name, instant and path. Next is user defined attributes. So here, beside the predefined attribute, VHDL also allow users to create their own attributes. Such attributes are used to decorate named entities with additional information or values. It is just used to decorate the entity. To create a user-defined attribute, a declaration and a specifications are needed, as shown in the simplest syntax below. So there are two syntax. First is attribute declaration and second one is attribute specification. So this is again user-defined attributes.
So see the syntax. First is the attribute underscore name, attribute underscore type. And next one is the attribute specification, where syntax is attribute underscore name of entity underscore tag. Then in square bracket, it is a signature. Then entity underscore class is value. So here this entity underscore tag is nothing but the name of entity to be decorated with the attribute. So next is entity underscore class is nothing but any VHDL entity. We can say that entity, architecture, package, file, etc. And the value is nothing but the chosen for the attribute. The value we can write down, which is chosen for the attribute. It is user defined. If you want, we can define. Otherwise, we cannot use this type of attributes. Okay. So these are the attributes in the HDL. So up to that, this we have covered objects, data types, operators, attributes. Yes, these all are all nothing but the basic fundamentals of VHDL, where we have studied how to write down entity, how to write down architecture, different data types, different operators, signals, variable, constants, and attributes. Now let's move toward the main code. So basically, VHDL language has two types of codes. We can write down two types of code in this VHDL. First one is the concurrent code and another one is the sequential code. So what is the basic difference between concurrent code and VHDL, sequential code? So as we know that in digital circuits, there are two types of basic circuit. First one is the combinational circuit and another one is the sequential circuit. So in combinational circuit, the output is depends upon the present input only. So for this type of combinational circuit, we can use concurrent code for designing the combinational circuit. You can remember C for combinational, C for concurrent also. So with the help of concurrent code, we easily describe the combinational circuit, or we can write down the code of any combinational circuit with the help of concurrent code. Another code is sequential code. So that sequential code is used for designing sequential circuits, which has memory device and clock, right? So that sequential circuit is more complex than combinational circuit. So in second, third lecture, we have designed the code of half adder, full adder, right? These both circuit, half adder and full adder, are combinational circuit, and that code is also called as concurrent code, in which only and after changing the input, the output will change, or we can say the output is totally depends upon the present state of input only, right? So here we are going to study the concurrent code. So in this concurrent code, the order of statement does not matter. Why? Because whenever the input changes there, output will change. यहाँ पे हमें कोई जरूरत है क्या? Y is equals to हम लोग क्या लिखेंगे? A plus B and X is equals to suppose B plus C. तो पहले Y execute हो या फिर X execute हो, आउटपुट तो दोनों में आएगा. इंडिपेंडेंट नहीं रहते जो भी दो इंस्ट्रक्शन है, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं रहते, इट इज इंडिपेंडेंट. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने, सपोज इफ अ कोड यूजेस 3 concurrent statements called as stat1, stat2 and stat3, then any of the following sequence will render the same physical circuit.
after executing any of these signal, any of the statements, that is in first it is first is state 1, then state 2, then state 3. So suppose I am writing the program where the code is the code of any circuit, it has suppose 3 statements, state 1, state 2, state 3. So the sequence is, for one code, the sequence is first it executes state 1, then state 2, then state 3. After executing the code, I am getting the same circuit which will get after executing the second code. Here in second code, I'm executing first state 2, then state 3, then state 1. And in third one, it is state 3, state 1, state 2. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी हमने स्टेट्स दिए हैं यहाँ पे कोड में, तो ये कैसे भी सीक्वेंस चेंज किया है, पहले स्टेट 1 2 3 एग्जीक्यूट किया, फिर 2 3 1 एग्जीक्यूट किया, फिर 3 1 2 एग्जीक्यूट किया. So after executing this all, we will get the same circuit. That's why it is called as a concurrent code. So in this concurrent code, there are 3 basic concurrent statements. First is when, another one is select, and third one is generate. So with the help of when statement, we can generate the code. With the help of select statement, we can write the code, or with the help of generate statement also, we can write the concurrent code. तो जो हमने देखा था हाफ एडर फुल एडर में, दैट इज ओनली द ऑपरेटर कोड. वहां पे हमने सिर्फ ऑपरेटर यूज किए थे. वी विल नॉट यूज when, select and generate in next program. See, this is one example where I'm using the combinational logic unit. Why? Because we are studying the concurrent code only. So this is the diagram of 4:1 mux. We call it as a block diagram because only input and output lines are there. There is no any internal circuitry. So it is nothing but the block diagram of 4:1 mux, which has 4 inputs: x0, x1, x2, x3. Select lines. There are 2 select lines, select 0 and select 1. And the output is y. Select 0 and select 1 is mentioned. No? So this is the truth table where when select lines are 0, 0, at that time we will get y is equals to x0. Whenever the select lines 0, 1, at that time y is equals to x1. When it is 1, 0, then y is equals to x2, and it is 1, 1, y is equals to x3. You have already studied in DT, right? So for this 4:1 mux, we are going to write the code. That is the VHDL code. So for this lecture, we will write the code for multiplexers. In last lecture only we have decided na, for every lecture we will design the code for any circuit. So for this lecture, I am selecting this 4:1 mux. Okay. So see, it is the code for 4:1 mux, where first part is entity. The entity name is mux. Entity mux is, next one is the port, where we have to define input and output ports. So input क्या है? x0, x1, x2, x3. All are in std underscore logic, right? Next one, select. So here you can write down select 0, comma select 1 in bit, or you can write down select in std underscore logic underscore vector. Why we are using this std underscore logic underscore vector? Because we are defining SEL is a array which is 1 down to 0. It means it is a
and y is our output, that is out std underscore logic, right? Then and entity, so and the name of entity is mux, semicolon. Next part is architecture. आर्किटेक्चर में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्चुअल कोड और द फंक्शन ऑफ द सर्किट. तो यहाँ पे आर्किटेक्चर को नाम क्या दिया है मैंने, ऑपरेटर्स अंडरस्कोर ओनली. व्हाई? बिकॉज दिस कोड यूजेस ओनली ऑपरेटर्स. as we have seen in the last slide, there are three types of concurrent statements, right? While, select and generate. So we are going to study all these statements for this code also, but here this is the simple code where we use only operator. This is the concurrent code where we are using operators. So the architecture, the name of architecture is operators underscore only of the architecture of mux is there. So write the same name which is given in the entity, that is mux mux is. Next is begin. Now begin the code. So how to write down the code? Architecture में हम लोग क्या लिखते हैं, only boolean expressions. So according to truth table, we will write the output equation. For example, y is equals to in bracket not select one. Not select one मतलब क्या? Select one bar. Why? Because if you see here, the first combination is 0 0. Or for 0 0, we will take select 0 bar and select 1 bar. And whenever it is 1, we will take the signal as it is. So first हमने क्या किया, यहाँ पे 0 मतलब select 0 का bar, that is not select 0, not select 1. For next, it is not select 0, select 1. Select 0, here we will take not select 1, and for this last 1 1, we will take select 0 and select 1 as it is. So this is what the boolean expression for 4:1 marks, where the first equation is not select 1 ANDed with not select 2 ANDed with x0. At that time you will get y is equals to x0. Or next, not select 1 ANDed with not select 0 ANDed with x1. See, ट्रूथ टेबल में जैसे दिया है select 0 select 1 के लिए सेम हमें लिखना है, प्लस उसको हमें एंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या मिलता है आउटपुट में x0, देन एंडेड विथ x0. सेकेंड कॉम्बिनेशन में x1, in third it is x2, and last it is x3. Now next, AND operators only, that is the name of architecture. Is it clear? अभी ये इक्वेशंस आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हैं कि ट्रूथ टेबल से हम लोग के मैप बनाते हैं, के मैप में सारे वैल्यूज डालते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट के मैप वी कैन राइट डाउन द बूलियन एक्सप्रेशन. Now this code you can write, or you will write for practical also. So take this example as your homework. आप खुद से ड्रॉ करो. फर्स्ट क्या करना है आपको, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी है. क्यों? क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से आप लोग एंटिटी इजीली लिख पाओगे, कितने इनपुट पोर्ट है कितने आउटपुट पोर्ट है. नेक्स्ट, गो फॉर द ट्रूथ टेबल. व्हाई? बिकॉज इन आर्किटेक्चर यू हैव टू डिफाइन द बूलियन एक्सप्रेशन. So for that boolean expression, first you have to know what is the truth table of that circuit. Then go for the K map. After K map, you will get the boolean expression. Boolean expression लिखो आप, output equation क्या आएगा y के लिए, same expression आपको architecture में begin के बाद डालना है. Right? जैसे हमने half adder full adder के लिए किया था, same we are going to do it for this multiplexer demultiplexer also. तो ये आज के लिए आपका होमवर्क है. आपको मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है खुद से. उसके लिए आपको के मैप भी पढ़ना है. के मैप में सारे वैल्यूज जो ट्रूथ टेबल में प्रेजेंट है वो सब डालिए, और आफ्टर सॉल्विंग दिस के मैप यू विल गेट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट, एंड दैट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द सेम हियर. जो आर्किटेक्चर में हमने डिफाइन किया है, सेम एग्जाम्पल सेम इक्वेशन रहेगा. अभी जिनको पता है उनको डायरेक्टली समझ में आएगा कि वाई में मैंने क्या डाला है, लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं है
कि आउटपुट इक्वेशन कैसे निकालना है, उनके लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ये एज अ होमवर्क करके कंसिडर कर लीजिए और अपने नोटबुक में ये डिजाइन कर लीजिए, ठीक है। So this is the code for 4:1 multiplexer by using operators only. Now, here we are going to study the when statement. This is the simplest conditional statement in concurrent code. So concurrent code में कौन से statement थे? When, select and generate. So now we are going to study the when statement. This is the simplest conditional statement. The syntax is given in the slide. See the syntax, that is assignment underscore expression, then when condition else. Next again same the assignment underscore value, when condition else. यहाँ पे सिर्फ वो conditions दिखाएगा, पहले हमने असाइन किया, सपोज फॉर एग्जाम्पल सी यहाँ पे दिया मैंने q is equals to 0 when reset is equals to 1. ये reset is equals to 1 क्या है, कंडीशन दी है मैंने, राइट कि रिसेट 1 है तो ही क्यू में 0 चाहिए, एल्स डी अगर रिसेट 1 नहीं है, इट मींस व्हेन रिसेट इज 0 एट दैट टाइम क्यू इज असाइन्ड एज डी व्हेन क्लॉक इज इक्वल्स टू 1. सो आफ्टर रीडिंग दिस एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है क्या ये कौन से सर्किट का कौन से सर्किट के लिए ये कोड होगा? Q is nothing but the output. आउटपुट में हमें 0 चाहिए, कब? जब रिसेट 1 है तो, हाँ, और आउटपुट में हमें D मिलेगा कब? जब क्लॉक इज इक्वल्स टू 1 है तो. Yes, this D itself specifies that it is a code of D flip flop. D flip flop में क्या होता है? अगर रिसेट 1 है तो D में डेटा इनपुट जो है, डेटा में जो भी रहेगा, D में जो भी इनपुट रहेगा, either 0 or 1, we will get output is equals to 0 only. Why? Because reset is equals to 1. reset हमने 1 किया तो वो क्या करेगा? आउटपुट को रिसेट कर देगा. रिसेट मतलब क्या करेगा? 0 कर देगा. else के बाद क्या है? when, else के बाद क्या आएगा? q is equals to d when clock is equals to 1. अगर क्लॉक सिग्नल में 1 है तो ही हमें q is equals to d मिलेगा. तो d मतलब क्या? जो भी हमारा इनपुट है, अगर 1 है तो q is equals to 1 मिलेगा, अगर 0 है तो q is equals to 0 मिलेगा. Yes, getting? Are you getting or not? यहाँ पे हमने क्या किया है? सिर्फ when स्टेटमेंट यूज किया है. ये सिंपल मैंने एग्जांपल बताया है. सिम विद द हेल्प ऑफ when स्टेटमेंट वी विल सी द कोड फॉर 4:1 मक्स. अभी हमने 4:1 मक्स देखा था विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स ओनली, राइट? जहाँ पे हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिए थे, सिर्फ कॉन्करेंट कोड लिखा था with the help of truth table and boolean expression, right? Now here we are going to write down the code for 4:1 mux using when statement. This when is nothing but our concurrent statement. So see here, the change is generic. First line is same, that is entity. The name of entity is mux is. Entity mux is. Next, we are going to define here generic. एंटिटी में हमने टोटल 2 सिंटैक्स देखे थे, याद है आपको? फर्स्ट सिंटैक्स में सिर्फ पोर्ट्स डिफाइन किए थे और नेक्स्ट जो सिंटैक्स हमने देखा था सेकंड वाला, जिसमें ऑप्शनल पार्ट था विच इज जेनेरिक. अगर रिक्वायर्ड है तो ही डिफाइन करेंगे. जेनेरिक में अगर कहाँ पे हमने डिफाइन किया है, सपोज अभी जेनेरिक में हमने क्या किया है? डिफाइन n इज व्हाट? इंटीजर विच इज कांस्टेंट, राइट? इंटीजर में हमने क्या दिया है? n, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो जेनेरिक में यहाँ पे अभी हमने कांस्टेंट मेंशन किया है. सो एंटिटी में थ्रू आउट एंटिटी जहाँ पे भी n आएगा वो एज अ 8 करके ही वैल्यू लेगा. हमें प्रोग्रामिंग के बाद इट विल नॉट आस्क फॉर दैट n.
प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है, वो हमें वैल्यूज पूछता है कि हाँ x0 x1 x2 x3 आपने एज ए इनपुट दिया है, तो एग्जीक्यूट करने के बाद वो हमें वैल्यू पूछेगा कि हाँ इनपुट में आपको क्या देना है, राइट। तो यहाँ पे हमने जेनरिक में कांस्टेंट डिफाइन किया है n इज इक्वल्स टू 8, मतलब वो कांस्टेंट डिफाइन भी किया है और 8 जो है नंबर वो n को हमने असाइन भी किया है। तो एंटिटी में थ्रू आउट एंटिटी जहां जहां पे n रहेगा ऑटोमेटिकली इट विल टेक 8 एज अ n, ठीक है। दैट इज द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट इज पोर्ट, सेम x0 x1 x2 x3 all are input port. So in std underscore logic underscore vector, अभी यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या किया हमने, n-1 डाउन टू 0 किया है, मतलब अभी x0 जो है वो सिंगल बिट है क्या, नहीं, it is n-1, n is 8, 8 minus 1 is nothing but 7 down to 0, so it is 7 bit input, understood। अगर सिंगल बिट लिखा तो आइदर 0 और 1 आएगा, अगर वेक्टर डिफाइन किया अंडरस्कोर वेक्टर डिफाइन किया देन इट इज array टाइप। सो x0 x1 x2 x3 हियर क्या है, ये array टाइप सिग्नल्स है। ओके, नेक्स्ट वन इज अगेन सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन यहाँ पे सेम, you can mention in both way, either select one or and select two as an input std underscore logic, or select as a in std underscore logic underscore vector n-1 down to sorry 1 down to 0, because only two select lines are required for 4:1 marks. Select 0 and select 1. Next last signal is y, which is output type. Again, as the inputs are both x1 x sorry all that x1 x0 x1 x2 x3 all are array type, then in output also we are getting the same array. So यहाँ पे y is equals to out std underscore logic underscore vector n-1 down to 0, मतलब आउटपुट में भी हमें array ही मिलेगा एज आउटपुट। क्यों, क्योंकि इनपुट जो 4 लाइन से that is 8 bit, so at the output also we are getting the 8 bit. Next, and entity. Next one is the architecture. So here the name of architecture is written, that is with underscore when. लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स लिया था तो ऑपरेटर डिफाइन किया, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, आर्किटेक्चर विथ अंडरस्कोर व्हेन स्टेटमेंट। व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग व्हेन। आप यहाँ पे कोई भी आपको चाहिए वो नाम दे सकते हो, सिर्फ एंटिटी में जो नाम दिया है वो नहीं देना है आपको। तो एंटिटी में मैंने मक्स दिया है तो आप मक्स अंडरस्कोर व्हेन करके दे दो, व्हेन अंडरस्कोर मक्स करके दे दो, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो हियर आई एम राइटिंग विथ अंडरस्कोर व्हेन ऑफ एंटिटी नेम मक्स इज। नेक्स्ट बिगिन आउटपुट y, यहाँ पे अभी चेंज देखो क्या हुआ है, y इज इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या दिखा है यहाँ पे x0 व्हेन सिलेक्ट इज इक्वल्स टू 0 0, मतलब सिलेक्ट में अगर सिलेक्ट इज 2 बिट सिग्नल, राइट, सिलेक्ट 0 एंड सिलेक्ट 1, सो अगर सिलेक्ट लाइन में 0 0 है देन इट विल सिलेक्ट x0 एज अ आउटपुट, एल्स जहां जहां पे भी हम लोग when लिखेंगे at the end of that sentence else is there. So x0 when select is 0 0, else y is equals to x1 when select is 0 1, else y is equals to x2 when select line is 1 0, else x3. So if you compare both codes, that code with using operator and this code where we are using when statement, so you come to know that this code, that y, this code in architecture y is the simplest form। यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। मक्स में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्स डिवाइस विच हैज मेनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट। तो सिलेक्ट लाइन से हम लोग जो इनपुट लाइन सिलेक्ट करेंगे वही लाइन का जो डेटा है वो आउटपुट में चला जाएगा। तो जैसे हम ओरली बोलते हैं
बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए यू नीड ट्रूथ टेबल एंड के मैप। तो उससे कैलकुलेट करके जो आपको आउटपुट इक्वेशन मिला, सेम आउटपुट इक्वेशन हमने आर्किटेक्चर में लिखा था। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन की कोई जरूरत है क्या? डायरेक्टली वैन यूज कर रहे हैं हम। मतलब सिलेक्ट लाइन 0 0 है तो आउटपुट में हमें x0 चाहिए, 0 1 है तो x1 चाहिए, अगर 1 0 है तो x2, एंड एल्स मतलब लास्ट कौन सा कॉम्बिनेशन रह गया? when select is 1 1, at that time we will get x3 as a output, and last line is end architecture. Is it easy? Yes.